Hello everyone. Hi. Hi. Hello friends. Hi everyone. Hi everybody. खुद से मुलाकात के सेकंड एपिसोड बातें कुछ अनकही सी में आपका स्वागत है। अपनी फील्ड के कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि आज हमसे डिस्कस करेंगे कि उनका आइडिया क्या है मेंटल हेल्थ का और वो क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन में अपनी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने। आइए उनसे मिलते हैं। Hi. My name is Neha Shah Gupta. My organization Lots of Learning, it works towards enhancing personality of individuals, both children and adults. We strongly believe in the direct correlation between self-esteem and personality. So when we conduct any workshop, the core message of enhancing self-esteem is in place in every workshop at Lots of Learning. Well, in this aspect of learning and development, we strongly acknowledge the importance of mental, physical and emotional development equally, if not one more than the other. Mental health is equally important and requires equal attention for self-development without a doubt. Hi everyone, my name is Sakshi Danjal. I'm a motivational speaker, astrologer and artist and a multitasker, a blogger as well. So thanks first of all to Pehel Foundation that you people have given me the opportunity to speak on this medium. हम जब कुछ expect कर रहे होते हैं, things are not working that way. We go through energy. हम अंदर ही अंदर बातों को रखते हैं, बात बोल नहीं पाते, डिस्कस नहीं कर पाते, किसी से शेयर नहीं कर पाते, किसी फ्रेंड से भी नहीं शेयर कर पाते. वो क्या सोचेंगे, क्या परसेप्शन होगा लोगों का होती है एंड दे हैव टू कम थ्रू. इवन दो हम कोशिश भी करते हैं बट हम सोसाइटी को देख के चुप हो जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे एंड हम बोल नहीं पाते बट स्टिल वी ट्राई टू कम ओवर फ्रॉम द थिंग्स. दैट इज समवेयर द पार्ट. And about this quarantine, what I'm doing during this time to keep myself healthy, happy, beautiful. See, so start होती है. What I am doing during this quarantine, I am painting, I am creating vlogs, I am giving these kind of like I come with the medium through like different channels live. And what else I'm doing, I'm exercising a lot. I'm doing aerobics and we are with Riya Taneja, she's one of the mentor. And what else? I am taking care of myself, my skin, my hairs. I'm learning more styles and you know parents के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, कुकिंग सीख रही हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे नहीं आती थी मैं वो कर रही हूँ. मैं मानती हूँ हम स्टेप आउट नहीं कर सकते बट हम स्टेप इन कर सकते हैं अपने आप में. मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेडिटेशन करके मैं सीख कर रही हूँ अपना हायर पर्पस को कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ एंड हाउ कैन आई हेल्प द पीपल मोर. Hi, my name is Janvi and I'm professionally an anchor. So being an anchor मेरी शुरू से ही हैबिट रही है लोगों के बीच में सोशलाइज करना, लोगों के बीच में जाके इवेंट्स करना या फिर अपने आप को कहीं ना कहीं इंटरेक्टिव रखना. लेकिन आजकल लॉकडाउन की वजह से ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ पे इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर जस्ट इनटू दीज 4 वॉल्स एंड हम लोग अपने आप को आइसोलेट करके घर में बैठे हुए हैं एंड लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं. ऑब्वियसली बात है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है. व्हाट आई बिलीव मेंटल हेल्थ इट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ जिसको हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं. किसी फिजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी वी नीड वन सपोर्ट दैट रिमेन्स होप. वो चीज़ भी हमारी मेंटल हेल्थ की वजह से आती है. अगर हम मेंटली स्ट्रांग फील नहीं करेंगे, स्टेबल फील नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अपने आप को ओवरकम नहीं करवा पाएंगे हम किसी भी सिचुएशन में से. लॉकडाउन का पीरियड ऐसा है जहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव पहल की तरफ से जो ये इनिशिएटिव है दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए बिकॉज बहुत लोगों को ऐसा लगता है दैट वी आर जस्ट ओवर थिंकिंग. वी जस्ट डू नॉट रियलाइज कि ओवर थिंकिंग कैन बी द फर्स्ट इनिशियल स्टेप ऑफ गोइंग टूवर्ड्स डिप्रेशन. ये सारी प्रॉब्लम्स हम बहुत सारे लोग फेस करते हैं, बस उसको हम फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, उसको ओवरलुक कर देते हैं कि ठीक है यार सबके साथ होता है, जबकि ऐसा नहीं है. With daily stress and to build up resilience to pay back towards your community. In short, it's a pass to have an amazing life.
Hello friends, I'm Nidhi Jain. I'm a fashion stylist and I run a boutique by the name of Swasti Creation. I also do personality enhancement classes as a freelancer. Mental health. Today I'm asked to talk about mental health. Mental health is a very important aspect of our life because if you're not mentally fit, we are nowhere. काम पे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे अगर हम मेंटली अपसेट हैं तो. मेंटल हेल्थ लेकिन सबसे कम टॉक्ड टॉपिक है हमारे सोसाइटी में. इफ़ यू फिजिकली फिट यू हैव लॉट ऑफ प्लेसेस टू गो. लोग आपको लेक्चर्स दे देंगे, ये खा लो, ये कर लो, ये ऐसा कर लो, आप योगा क्यों नहीं करते. बट व्हेन यू आर मेंटली अपसेट और यू आर लो, you will not get any help. In fact, you will not know where to go if you are not feeling good or you are having any problems related to your mental health. I myself felt this experience when my son went to the college. I had these deep panic attacks and sets of depression, and then I realized that I just don't have anybody to talk to. I just don't know what to do. Then my friend suggested a psychologist and I was like, what? Am I going mad? Why do I actually need a psychologist? This was my first impression. And trust me, it is much easier to go to a psychologist than to go to a dentist. Mental health is very important and I feel that there should be somebody we can talk to about it and we can seek help from. We definitely need this because the stress level, the anxiety levels are really high these days. If you talk of this lockdown, it was initially I did not like it, to be very honest with you, because I'm a businesswoman. It was like a financial loss. But then I realized that I'm not stuck at home. I'm safe at home. There I could do all the things that I always wanted to do if not going to my boutique. I could do gardening, I could do my yoga and meditation. I had no rush to go anywhere in the mornings. I had peaceful cup of tea. And I could cook for my family. And I could make elaborate dishes for them which I had stopped doing for quite some time. लॉकडाउन के पीरियड में अगर देखा जाए, मेरी बात की जाए तो आई हैव चैलेंज्ड माई सेल्फ फॉर ऑल दोज थिंग्स आई इमेजिन दैट आई नेवर कुड डू दैट. जैसे मेरे जितने भी फेवरेट जंक फूड होता था जो मैं हमेशा बाहर से ऑर्डर करके खाया करती थी या बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाया करती थी, वो सब मैंने घर पे बनाना सीखा. सो कुकिंग जिसमें बहुत सारे लोग इस वक्त इन्वॉल्व हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. लोग उसको लेके मीम्स बना रहे हैं. जस्ट इग्नोर दैट. Do whatever makes you feel happy. Eat. If you want to eat, please eat. No matter what. लोग आपको कुछ भी बोले. Workout कर रहे हो, workout करो जितना कर सकते हो. Involve yourself on the productive side so that you can keep yourself happy, and that is what matters. The lockdown time has not been easy and has been quite challenging, and it has taken a toll on a lot of us. 3 things that I have tried to do to keep myself up and about. Number 1 is having a routine in place. For myself and of course for my daughter, has helped us tremendously keeping our sanity in place. Number 2, any activity which makes us happy, and in that aspect exercising has been extremely helpful for me. Other things can be reading books, I've been listening to music, singing, dancing, anything which pushes me and makes me moves my body. It helps. Number 3, journaling. At the end of the day, it helps me to express my day. Tells me what have I done. Also tells me how have I felt. So these are the 3 things which has tremendously helped me to get through this lockdown. So the question is, how do I manage? I keep myself happy in the lockdown. Well, as we all know, this pandemic has come all of a sudden, and we were not prepared for that. I was having my robotic 9-to-5 life. Still having some part of it because I'm from medical profession, so I'm one of the frontliners. But otherwise, out of that busy life, I think once I come home, because we're not going out, we're not socializing as such, not going to cinema, so we have got an ample amount of time with us. What I tend to do is the things that I've not been able to do for a long time, that is reading. I had accumulated a lot of books, I didn't have time to think about it, I started reading about it. Writing, I'm doing it more often. I'm a blogger, so my blogs had kind of dried out. So I'm doing that. I'm doing a lot of writing.
I'm playing a lot of guitar, something that I love doing. It's a stress buster for me. But more recently, I've been getting more time in doing so. I connect with my colleagues, with my class fellows from my medical school that I've never had the opportunity to speak to. Like we do a Zoom call, and it's kind of an intercontinental call from people from states in Australia, New Zealand, UAE, Pakistan and UK. We come together and we have a chat. It's quite a big group, but I think that has come to me as a surprise how refreshing that can be for yourself, not just seeing them, but appreciating how much they have grown in terms of their personalities, their statures, which is quite good to see. You get to spend a lot of time with your family, things that you can do with your family, husband and wife. Like my opportunity to spend a lot of time with my wife, with my kids, doing a lot of stuff together. That can be a sporting activity or a board game or a traditional name, place, animal thing, something like that. So I'm trying to make the most out of it, trying to make myself happy in this lockdown, and it's actually working well for me. Thank you. मेंटल हेल्थ को लेकर जितनी अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है उतनी अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी चाहिए. एंड थैंक यू सो मच पहल वंस अगेन फॉर इन्वॉल्विंग मी इनटू दिस कैंपेन. थैंक्स अ लॉट. So thank you so much and Pehel Foundation for giving me the chance to speak on your behalf on this medium. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप सबने पहल को अपना टाइम दिया. मुझे उम्मीद है कि आप सबकी बात सुन करके लोग मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे जितनी वो अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं. सो सब अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, दोनों मेंटल और फिजिकल हेल्थ. हैव अ गुड डे.